Hello guys, so today we have come here to give our tribute to one of the finest actor on in Bollywood. So he's not here with us anymore. His name is Irfan Khan. Yes, So today, I think morning, he he just passed passed away. away. His age was So only 53. 53 years old Yes, only, and he's a finest actor, and he owns several awards. His contribution is endless towards yes, the and film he's industry, and we are really proud of him. yes, We and really miss you, when we sir. heard that news in the morning, We we were are in very, shock. yes, we are shocked, and Firstly, we thought we that, didn't believe that yeah, that's ऐसा all. कुछ हुआ भी है. We thought it is a fake news going around, because like nowadays fake news Yeah, are a lot in right. Facebook or in other social media. देन व्हाट आई So डिड आई then, स्विच्ड ऑन द न्यूज़ चैनल. उसके बाद मुझे सब चीज़ पता चला कि ओके ऐसा and ऐसा that was केस very हुआ. heartbreaking, राइट. and we couldn't believe जब हम न्यूज़ चैनल्स भी देख रहे थे ना, तब भी लग रहा था कि ये कोई अफवाह है, ये कोई मतलब रियल न्यूज़ लग ही नहीं रहा था. राइट. तो it was very pain, and very difficult for everyone to Yes. accept this fact Right. that he is no more. So एब्सोल्युटली राइट. एंड इसीलिए हम सोचे कि क्यों ना आज उनके कुछ फिल्म्स के ग्लिम्सेस हम देखें, और यही होगा हमारा ट्रिब्यूट उनके लिए, क्योंकि Yes. वो नहीं रहे, लेकिन उनका जो टैलेंट है, टैलेंट एक्टिंग है, वो जो चीज़ हमेशा दिखा रहेगा. करके हमें एकदम खुश किए हैं, हमें हंसाए हैं, वो सब लेकर के भी उनका आज हम आउटस्टैंडिंग कुछ चर्चा एक्टिंग, करें, थोड़ा देखें आप लोगों थोड़ा के बात साथ. करें आप लोगों के साथ, तो थोड़ा रिकॉल हो जाएगा और Yes. ज़्यादा, और हम उनके जो भी अचीवमेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे लेटर ऑन. Yes. क्या कि वो कैसे, मतलब कौन कौन से फिल्म अवार्ड्स जीते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे. तो इट्स वेरी पेनफुल टू say Accept also, it, right. accept also, and talk about also, but life goes on, so we have to accept this fact Yes. that okay. So let's get started then. या Okay. अपनी वाइफ को सरप्राइज करने के लिए जल्दी घर पहुंच जाता है. बेडरूम में क्या देखता है, उसकी पत्नी किसी और के साथ बिस्तर पे सो रही है. Blackmail. उसके बाद पता है पति क्या करता है? पति उस आदमी को ब्लैकमेल करने लगता है. The real acting. बाज चूजे पे चढ़ता है, उठा लेके. कहानी सच्ची लगती है लेकिन अच्छी नहीं. फॉर एक्टिंग. बाज पे पलटवार हुआ. कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन खुदा कसम बहुत अच्छी लगती है. हमारे वकील ने कहा है कि आपकी पिक्चर कोर्ट में नहीं चला सकती. कोर्ट में पिक्चर चले नहीं चले कोई बात नहीं, ये तेरा दिन होगा बेटा. तेरी अम्मा ने इसके बारे में नहीं बताया, मैं तेरा वो बाप हूँ. I was the ideal voter. अपनी घर गृहस्थी आटे दाल में उलझा हुआ, जो सपना दिखाया देख लिया, जो टीवी ने बोला, जो अखबार ने बोला मान लिया. लेकिन तुम मेरी दुनिया मुझसे छीनोगे, मैं तुम्हारी दुनिया में घुस जाऊंगा. भाई सोडा बाटली की कीमत तब तक जब तक कि वो बंद. जैसे ही बुझ खुला जाग बैठ जाता है और रह जाता है क्या? पानी. पानी. केलकर को पैसा भिजवा, उसने टिप दी है. मेरा दिमाग डाउन हो गया, मेरे लिए पड़ेगा नल्ला मगा. एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा. क्या बात. न दिल में कसक होगी, न सर में जुनून होगा. रेडियो में तुम्हारा नाम छा गया है. बंद करो जरा, बंद करो. सारा देश के लिए दौड़ा, किसी ने ना पूछो. अभी बागी बन गए तो सभी नाम जप रहे सारे. गांव चले जाइए माने भाग जाएं. सारे मारे लपड़ तुम्हारी बुद्धि खुल जाए. काहे भाग जाए बे? बहुत ज्यादा है तो भाग जाए. अबे तुम लोग गुरिल्ला हो, गुरिल्ला वार किया जाएगा. वे वो साले गुंडे हैं, सरकारी गुंडे हैं, हम क्रांतिकारी हैं. तुम लोग गुरिल्ला हो, गुरिल्ला वार किया जाएगा. देख ले जो होता है सो. दिल से प्यार करता हूँ, कोई बुरी नजर से नहीं देखता हूँ. वही तो यार, नजर का ही तो खेल है सब. सारा दिल तो वरना हमारा भी साफ है. भगवान ने हमें ऐसी आंखें दे दी, क्या करें. बस हवा ही भरी है गालों में, सुई चुभ जाए तो पिचक जाए. लोग उस समय बम नहीं बनते. इतना नजरों को झुका के मत चला करिए.
सिर्फ सड़क ही नजर आएगी और उसी तरह के लोग। अजीब सा एहसास है मन में, अजीब। जिस रोज नया दिन निकलता है मैं वही पुराना हूँ, दुनिया वही पुरानी है, वैसे ही चली जा रही है। लगता है मौत भी हमें साथ ही मिलने वाली है गिरफ्तार। आप मरने वाले हैं डॉक्टर साहब, मैं नहीं मरने वाला। वो कैसे जनाब? ऐसे कि आप जिस्म हैं मैं रूह, आप फानी मैं लाफानी। फिर दिखाया मेरे परवरदिगार ने मौजज़ा, इस रस्सी से हमें बांधा था वो खुद ब खुद खुल गई। जेलम का सर्द पानी दवा बन गया और मेरे रिश्ते जख्मों का खून सूख गया। आप कभी रेस दौड़े हैं? बाबा, रेस को एक नियम हो तो है, एक बार रेस शुरू है नहीं, फिर आप आगे हो के पीछे हो, रेस को पूरा करना पड़ता है। कौन है तुम? ओसामा बिन लादेन। गाड़ी कटा के आया हूँ ना, पहचान में नहीं आ रहा। तुम पर कैसे आया? दरवाजे थे। वैसे मौत तो कहीं से भी आ सकती है, मौत नॉक करके नहीं आती है। वह राजकुमार संतोषी जी आए हुए रामायण बना रहे, मैंने कहा रावण का ऑडिशन दे दूं। ऐसा रावण करूंगा कि मुगैम्बो, गब्बर, धुमटुका, रेतिक सब भूल जाएंगे। ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ और ऐसा ग्राफ पीछे बैंक बैलेंस ऐसा बढ़ेगा कि बैंक बैलेंस नहीं कर पाएगा, मानो या ना मानो। Wow. So now also watching this video, seriously, and I don't believe that he's no He is more no between more. us. So yeah, that is very hard to accept. But Yes. I told no, his acting and everything, like in this situation also made us laugh, made us smile, because how genuine, how real his acting is, and it is the priceless thing which are Yes. there with us. Right. He is no more, but his acting, his talent is us Yeah, with and us. truly it's a great loss for Bollywood also and Indian loss. cinema also. Yeah, so And big loss. he was really. too much famous also, and people from over the world knows him a lot. Yeah. And he has done couple of Hollywood movies Hollywood also. movies, Life of Pi, he has done. Yes. Recently, I think 1 or 2 weeks back only, we have seen that Angrezi Medium movie. Angrezi medium also. Yeah. So there also, he has he was acted like, he has acted superbly. Okay, Yes. the like whole movie was like surrounding his acting only. I Right. only liked his acting, Yeah. not anyone's acting. Okay, Yes. so that was like outstanding. And also we have seen Blackmail movie. Right. We have seen Hindi medium also. We have seen Life of Pi several times. We have Yes. seen Saath Khoon Maaf. There are a lot of movie we have seen. Lot Lot of movie. I And cannot in recall each movie, names, but he has done a great job, a fabulous job. unique He has unique contribution, you can say. done. Right. He's His a genuine acting actor. skill and whatever his expression, it's a fully true expression he always gives. Yes. And whatever the dialogue delivery Exceptional. he is having, that is really exceptional. Exceptional. In one shot we have seen a lot of dialogue he used to deliver in one shot only. Yeah, Long he's very dialogues talented. also. Correct. So now let's talk about his awards. He has won several awards. He's a Yeah. Padma Shri, first of all. 2011 he won Padma Shri award. That's really a great achievement. That's like for an Indian, it is I think the biggest thing for an Indian to get Padma Shri award. I think so. Then he got IFA award for best actor. So he got IFA awards 2 times, in 2018 for best actor and also in 2008 as a best supporting actor. Yes, he got Filmfare award And one also. more time he has got in 2011 as well. Yes. For outstanding contribution. Yes, he got Dubai International Filmfare Award, Guild Award for Best Actor in Supporting Okay. Role, He has Stardust got Award, Filmfare award for best villain in Tamil also. Tamil also. Yeah, CNN IBN Indian for the year in entertainment, he got that award also. Then he got Screen Award for the Best Actor, Stardust Award. I told. A lot of award. It's numberless. We cannot complete. It is numberless, and Of course, this Of course. this shows that how much great talent he had. he is genuine actor. He is a super personality also, and the way also he speaks, it's very down to earth. Yeah. Let's talk about his behavior. We have seen some his articles or live interviews and all. Yes. So we have seen that the way he present himself, it's very
humble. Yes, It's and very humble. And whatever I have seen, like whatever normal ways he used to speak in the movies or anywhere, he is speaking that same kind Same in kind, interviews also. So Yes. much cool, calm. Cool, calm. Yes. It is actually, you know, you can say the key point of his personality, that he was Yes. very cool and he was very calm. And lot of And time that you is- see that his humor is also coming out. Yeah. So it is a Yeah. big loss, you know, and we really are feeling very, you know, sad to say this, that he's no It's more very with us. It's very to hard accept this. for us, and also for the entire Bollywood industry, not only Bollywood film industry, Indian film industry, because he has done a lot of, you know, Yes. movies not only in Bollywood but also in some Right. other states That's also. why he got This award. best villain award from Tamil also. also. Yes. So we really miss you, sir, and rest in peace. Yes, Okay, that's what we can say. That's all we can say right now. And may your family be, you know, in peace, and they can have that And we strength have- yes, to we have overcome our this all support situation. towards your family. Yes. So yeah, that's all for today's video. We can't speak a lot now, and we are feeling very sad actually. And yeah, see you soon, guys, in some of our videos. Take care. Bye. Bye.